हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमाइन्स का एक और लेक्चर लेके आए हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर एमाइन्स। इट इज RNH2. RNH2. This is for primary amine. This is for primary amine. Here we are going to start the chemical properties of amines. Dear students, in case of amines, the general formula is RNH2 in case of primary amine. जो नाइट्रोजन amines का होता है, it is more electronegative in character than carbon atom and hydrogen atom in case of amines. Carbon atom R का होता है, hydrogen atom जो इसके साथ होता है in case of primary and secondary. Now also in case of amines there is the presence of this very lone pair of electrons. That is why, my dear students, amines are quite reactive. These are quite reactive. All the three types of amines. This is primary amine, R2NH, R3N. नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन वहां पे हाइड्रोजन कोई नहीं होता है। इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन एक हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन को अटैच होता है, उसके साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज द प्राइमरी अमाइन. In case of primary amine, 2 hydrogen atoms and 1 lone pair are there. That's why all the three types of amines, जो for example primary amine है, it shows one type of reaction. Secondary amine another type of reaction. Tertiary amine another type of reaction. मतलब maximum reactions, जितनी भी ये reactions chemical properties में दिखाती हैं, these are not quite similar. These are not quite similar. With respect to chemical properties, here we are going to discuss. आप लोगों ने यहाँ इस पे ध्यान दे दिया कि एमाइन्स के पास जो इनकी जनरल फार्मूला होती है उसमें नाइट्रोजन एटम होता है और नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वेरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these very amines are reactive. These will show many reactions, but all the three types of amines will not show same type of. कहीं कहीं पे यहाँ पे डिफरेंस आ जाती है कि टर्शियरी अमाइन एक तरह की रिएक्शन दिखाता है, प्राइमरी अमाइन वो रिएक्शन नहीं दिखाता है, प्राइमरी अमाइन एक रिएक्शन दिखाता है, सेकेंडरी अमाइन वो रिएक्शन नहीं दिखाता है. नाउ विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, वी आर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स. डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो प्राइमरी अमाइन होता है इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंडरी में भी होता है और टर्शियरी में भी होता है. दैट इज व्हाई ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ अमाइन्स आर लेविस बेस. व्हाट इज ए लेविस बेस? A substance which donates an electron pair, or a substance which donates its lone pairs of electrons. In case of amines, my dear students, ये primary amine है. This is primary amine. This is R2NH. यहाँ पे भी lone pair of electron होता है. R3N. This is 3-knot amine. This is 2-knot amine. This is 1-knot amine. All the three types of amines, these are considered as Lewis bases. They have the tendency, they have this very property that they will donate that very lone pair of electron. Now यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स. व्हेन दे आर इन अ पोजीशन टू डोनेट दैट वेरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कंसिडर्ड एज लेविस बेसिस. सम ऑफ द एग्जांपल्स where we are in a position to show that amines are Lewis bases.
that is first reaction with respect to basic nature of amines. We will discuss the first reaction of amines, that is reaction with water. Reaction with water. First reaction with respect to basic character is reaction with water. यहाँ पे हम देखेंगे my dear students how amines are basic in nature. ये किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं RnH2, यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर है प्लस HOH. HOH means H2O. My dear students, we are saying that amines are Lewis bases. At the same time, there is another definition, there is another concept for bases, Bronsted-Lowry concept. Amines are both Lewis bases as well as Bronsted-Lowry bases. Mind my dear students, what is a Lewis base? अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा a Lewis base is a substance which donates an electron pair, जो एक electron pair को donate करता है. और Lewis का concept with respect to acids and bases मैं कह रहा हूँ. With respect to Lewis concept, acids bases are those substances which donate an electron pair. उसका opposite, acids are those substances which accept an electron pair. Another concept for acids and bases is their Bronsted-Lowry concept. As per Bronsted-Lowry concept, Bronsted-Lowry concept, एक base accepts a proton. A base is a substance which accepts a proton. Proton is H positive, my dear students. And acid donates a proton. Proton is H positive. My dear students, this is the concept, Bronsted concept for acids and bases. बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करता है. लेविस कंसेप्ट क्या है? लेविस कंसेप्ट, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. Electron pair acceptor. Now my dear students, amines are both Lewis bases as well as Bronsted-Lowry bases, because in this very case, as you know, the nature of water is amphoteric. It is amphoteric in nature. यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो. The nature of water is amphoteric and water is amphoteric in nature because it behaves, sometimes it behaves as acid, sometimes as base. Here in this very case, amine donates its electron pair to H of hydrogen. Here, यहाँ पे क्या हो जाता है? My dear students, this very electron pair moves here. There is the formation of RnH3 positive OH negative. When amines are treated with water, there is the formation of alkyl ammonium hydroxide. Alkyl ammonium hydroxide. In this very alkyl ammonium hydroxide, the aqueous solution of alkyl ammonium hydroxide contains OH negative. This will also dissociate into RnH3 positive plus OH negative. It has been found to be that it dissociates into ammonium and hydroxide ion. OH negative is hydroxide ion. Now, actually, मुझे क्या दिखाना था, my dear students, how we are saying that amines are basic in nature. That when we are treating amines, in this very case, primary amine with water, it donates its electron pair to the proton of water, or in other words, it accepts the proton. There is the formation of RnH3 positive plus OH negative. It has been found that, my dear students, the aqueous solution of alkyl ammonium hydroxide contains OH negative. That is why we are saying that aqueous solution of amines in water are basic in nature. Now, my dear students, यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि why
we are saying that amines are basic in nature, that they have the tendency to donate this very lone pair or accept a proton. Bronsted-Lowry concept and Lewis-Bayes concept. और एक चीज, second reaction is reaction with acids. Reaction with acids. Mind it, my dear students. Here in this very case, acid is water. Acid is water because it donates a proton which is accepted by RNH2. And RNH2 behaves as a base, and there is the formation of a salt. Alkyl ammonium hydroxide is a salt. Also we will say that when amines are NH2, here in this very case I am showing that primary amines. आप secondary amine भी दिखा सकते हो. When primary amine is reactive with an acid, for example it is HCl. Same is the case here. It accepts that very proton and there is the formation of RNH3 positive Cl negative. RNH3 positive Cl negative. These are known as alkyl ammonium chloride. और अगर यहाँ पे X होगा तो alkyl ammonium halides. This is base, this is acid, and this is salt. When an acid, famous reaction, when an acid reacts with a base, there is a formation of salt. Alkyl ammonium chloride, it is a salt. Alkyl ammonium hydroxide, it is a salt. Thus here in this very case, आप लोगों को मैंने यहाँ पे explain किया, जो amines होती है, these are considered as Lewis bases or Bronsted-Lowry bases. Why? Here in this very case, they are in a position to donate a proton, to donate an electron pair, and accept here a proton, and there is the formation of RNH3 positive Cl negative. That is with respect to acids. When bases amine is reactive with acids, there is the formation of a salt because amines are considered as bases. These are the two examples which illustrate us that amines are basic in nature. They react with water, alkyl ammonium hydroxides are formed. They react with acids, there is the formation of salts. यहाँ पे आप secondary amine भी दिखा सकते हो. अगर यहाँ पे secondary amine होगा R2NH plus HCl. यहाँ पे what will be the formation? R2NH2 positive Cl negative. यहाँ पे alkyl, यहाँ पे मैंने कहा alkyl ammonium chloride, यहाँ पे मैं कहूंगा dialkyl ammonium chloride. अगर यहाँ पे tertiary amine होगा तो trialkyl ammonium chloride. These are the examples which show us that amines are basic in nature, that they react with acids as well as they react with water. Now, basic nature of amines actually we are discussing here in this very case. My dear students, with respect to ionic equilibrium, आप लोगों ने वहां पे एक ionization constant for bases. In that very unit we are denoting it by Kb. And it is also known as basicity constant. Mind it. यहाँ पे actually dear students अच्छी तरह से समझ लीजिए. We are discussing basic nature of amines. After that we will discuss the basic nature of aliphatic amines, and after that aromatic amines. First of all, general concept about the basic nature of amines. Here in this very topic we will discuss about, in this very lecture we will discuss about the general basic nature of amines. Now यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब when amines are treated with water, alkyl ammonium hydroxides are formed. These are salts. When they are treated with acids, there is the formation of salt. Now, remember that with respect to ionization concept, the strength of bases or strength of amines is determined in terms of basicity constant. That is the ionization constant, which is denoted by Kb in case of bases, and in case of acids that is denoted by Ka. Remember it.
in case of acids. Ionization constant as per the chemical equilibrium unit or ionic equilibrium unit, that is denoted by ionization constant, that is acidity constant for acids. Here in this very case, basicity constant for bases. That is equal to, for example, I am saying that RNH2 reacts with HOH. यहाँ पे there is the formation of RNH3 positive plus OH negative plus OH. The basicity constant, remember that, यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को दिखाऊंगा. द बेसिसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे मेरा ये कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे मेरा ये टॉपिक नहीं है. बेसिसिटी कांस्टेंट, हियर द बेसिसिटी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ products divided by the concentration of reactants. Same is the case with acidity constant. It will be RNH3 positive OH negative divided by RNH2. यहाँ पे मैंने RNH2 भी क्यों दिखाया? Because water excess में हम लेते हैं, it is considered as a constant. It has been found that, my dear students, more the value of Kb, because Kb is directly proportional to the OH negative. More the value of Kb, or in other words, Kb increases, basicity constant for bases increases, strength of bases will increase, मतलब basicity increases. अगर किसी बेस का Kb का वैल्यू ज्यादा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. What we can say, basicity increases or basic strength increases. Basic strength increases. Mind it. Kb का वैल्यू इंक्रीज जब हो जाएगा, basicity increases or basic strength increases. Mind it, my dear students, there is another value pKb. It is equal to minus of log Kb. Mind it, my dear students, मैंने अभी कहा Kb का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, Kb का वैल्यू, बेस की स्ट्रेंथ, बेसिसिटी स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जो बेस होगी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज, मतलब वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होगी. बट मैंने एक और रिलेशन यहां पे आप लोगों को दिखाई, pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb. अगर Kb का वैल्यू ज्यादा होगा, बिकॉज एट दैट वेरी टाइम pKb will be lesser or smaller. In other words, आप इतना याद रख लीजिए, ये रिलेशन याद रख लीजिए. Kb increases, मैं यहां पे लिखूंगा Kb increases, basicity increases and pKb decreases. यहां पे मैं लिखूंगा decreases. Kb का वैल्यू ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा, लेकिन pKb का वैल्यू कम. If Kb decreases, basicity decreases and pKb increases. याद रख लीजिए. अगर आप लोगों से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि which of the following is more basic in nature, कोई ऑप्शंस दिए जाएंगे, which of the following is more basic in nature, विद रेस्पेक्ट, वहां पे उन 4 ऑप्शंस में उन्होंने pK का वैल्यू दिया होगा. मोर बेसिक इन नेचर वही होगी जिसका pKb वैल्यू कम होगा. pKb विद रेस्पेक्ट टू बेसिस, pKa विद रेस्पेक्ट टू एसिड्स. याद रख लीजिए, ये कंसेप्ट आप लोग याद रख लीजिए. अगर किसी भी बेस का Kb वैल्यू, उसका अपना एक वैल्यू होता है, ज्यादा होगा तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और pKb वैल्यू कम होगा. मतलब किसी भी बेस का pKb वैल्यू कम होता है, Kb वैल्यू, मोर स्ट्रॉन्गर बेस का pKb वैल्यू कम होता है, Kb वैल्यू ज्यादा होता है. अगर वीकर बेस होगी तो Kb वैल्यू कम होगा लेकिन pKb वैल्यू ज्यादा होगा. क्योंकि एक्चुअली Kb वैल्यू में हमारी प्रॉब्लम आ जाती थी, वो
10 raised power minus 30, 10 raised power minus 20 में आता था. That is why to simplify the kb values there is the relation pkb. pkb. Same is the case with acids. Same is the case with acids. यहाँ पे आप लोग खुद समझ जाओगे. kb increases, basicity increases, pkb decreases. उनके लिए relation है pka is equal to minus log ka. वही रिलेशन, यही के अगर ज्यादा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी और pKa कम होगा. pK सेम, यहां पे Ka इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, pKa डिक्रीजेस. K डिक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस, pKa इंक्रीजेस. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. दो रिलेशंस pKb is equal to minus log Kb and pKa is equal to minus log Ka. मतलब बेस का Kb वैल्यू ज्यादा होता है. जिस बेस की ज्यादा बेसिसिटी, बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसका Kb वैल्यू ज्यादा होगा, उसका Kb वैल्यू ज्यादा होगा और pKb वैल्यू कम होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू amines we are discussing their basic character. मैंने एक appropriate, एक मेन कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बताया कि amines are basic in nature. They react with acids to form salts. In case of water which is amphoteric in nature, at that very time water is considered as acid. When amines react with it, at that very time there is the formation of alkyl ammonium hydroxides. Also when it reacts with acids, there is the formation of the salts. My dear students, the basicity order of the basicity strength of amines is determined with the help of a basicity constant, that is Kb. More the value of Kb, more stronger will be the base, and lesser will be its pKb value. Lesser the strength of the base, lesser will be the value of Kb, and more will be the value of pKb. And same is the case with acids. Same is the case with, यहाँ पे मैंने दिखाया Kb. What will be the relation of Kb with this very reaction? Here in this very case it is directly proportional to the OH negative. आप लोगों को पता होगा कि जितना ज्यादा OH negative, जितना ज्यादा एक रिएक्शन में OH negative होगा, उतनी ज्यादा वो solution basic in nature होती है. Now my dear students, thus in this very lecture we have completed the इंट्रोडक्शन अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ amines. यहाँ पे मेन कंसेप्ट आप याद रख लीजिए, Kb वैल्यू का बेसिसिटी कांस्टेंट वैल्यू का बेसिसिटी कांस्टेंट बेस का ज्यादा होता है. अब आप लोगों को अगर विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी लेक्चर कहीं पे क्वेश्चन दिया जाएगा, कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वहां पे उसने Kb वैल्यू या pKa वैल्यू दिया होगा, तो आप लोगों को इजीली समझ आना चाहिए. इजीली आप लोग वो कर सकते हो कि जिसका pKb विद रेस्पेक्ट टू एसिड्स, pKb विद रेस्पेक्ट टू बेसिस, pKb वैल्यू कम होगा, pKb वैल्यू कम होगा, उसका Kb वैल्यू ज्यादा होगा और उसकी basicity ज्यादा होगी. Thus after that we will discuss the basicity of aliphatic amines, after that aromatic amines. This was the general concept about the basicity of amines with respect to basicity constant. Thanks for watching.